Welcome to We Learn. This is session 2, part 2 of business strategy about the process of strategy. Topic will be covered environmental and organization analysis, identification of strategic alternatives, choice of strategy, implementation of strategy, evolution and control. Yes, the first is this diagram is basically mentioning that the whole process of a strategic management. As we were going to discuss about the environmental analysis, so we were focusing on the first step of the strategic process. Strategic process के पहले step पर हम focus कर रहे हैं, that is environmental scanning. So yes, environmental and organization analysis. Every organization operate within an environment. This environment may be internal and external. So that there are two kind of environment which exist in the market, that is internal and external. Internal factor which comprise from the firm's environment, it is direct influencing factor. जो हमारे suppliers, हमारे customers, हमारे competitors होते हैं, they were comes into the those environment which affect the organization directly. And indirect influence factors are those like social, technical, political, and legal and economical environment. These all comes into the indirect influencing environment. That means these are the factors which have the effect on the organization but on the indirect basis. Yes, this is again the diagram of the internal which we already studied, that there was the three environment for the organization. Organization के तीन environments होते हैं जिसके अंदर direct और indirect parties होती हैं और company को इसे analyze करना ज़रूरी होता है. Now we were going to understand about the second step of the strategy, that is strategic formulation. Strategy किस तरीके से formulate होती है, which is working on the strategic alternatives. Yes, after identifying the environmental analysis, the next step is the top identify the various strategic alternative. यानी कि जब हम एक कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को स्टडी कर लेती है तो अगला कॉन्सेप्ट ये अराइज होता है कि वो किस तरीके की स्ट्रैटेजीज ऑल्टरनेटिव लेगी, यानी कि उसके पास किस किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज ऑप्ट करने के लिए. So the numbers of strategy that the organization can opt for, there have to be evaluations to match them in the environmental analysis. Yes, that's very obvious. हम एक स्ट्रैटेजी को तभी चूज़ करेंगे जब जो वो हमारे इन्वायरमेंटल एनालिसिस के साथ मैचअप करती हो. अगर वो इन्वायरमेंटल एनालिसिस के साथ मैचअप नहीं करेगी, इन दैट केसेस वी कांट गोइंग टू कंडक्ट और वी कांट गोइंग टू ऑप्ट द इफेक्टिव स्ट्रैटेजी. So yes, there are the few strategies which was written down on the slide. First is stability, expansion, retrenchment, combination, modernization, diversification, joint venture, strategic alliances, mergers, acquisitions, takeovers, disinvestment, turnover strategies. So let's first discuss about the stability. In this, the company does not go beyond what it is doing at present. The company serve with the same product in the same market with the existing technology. This is possible when the environment is relatively stable, and yes, at the same time modernization, improved customer services and special facility may be adopted in stability. Stability is if we were discussing in general term, this is that स्ट्रैटेजीज़ वो होती हैं विच ब्रिंग्स द कांस्टेंट इन द मार्केट. कंपनी जो काम कर रही है, जिस मार्केट के अंदर है, जिस टेक्नोलॉजी के साथ है, वो उसी के साथ स्टिक रहती है. बट येस, एट द सेम टाइम दे कैन इम्प्रूव ऑन दी कस्टमर सर्विसेज, दे कैन इम्प्रूव ऑन दी फैसिलिटीज़ विच वर दे वर गिविंग टू दी फैसिलिटी. तो एक ये स्टेबिलिटी जैसी स्ट्रैटेजी भी होती है जो कंपनी अडॉप्ट कर सकती है. देन एक्सपेंशन. एक्सपेंशन इज दिस इज़ दी अडॉप्टेड व्हेन द एनवायरनमेंट डिमांड इंक्रीज इन द पेस ऑफ एक्टिविटी. ये तब होता है जब हमारे एक्सपेंशंस तब होती हैं जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके की इंक्रीमेंट्स का डिमांड करती है. दैट मीन्स देयर वाज इन अ स्कोप टू ब्रॉडन द सिनेरियो ऑफ द एक्सपेंशन. Then retrenchment. Retrenchment is basically if the organization is going for this strategy, then it has to reduce its scope in terms of customer group, customer functions and alternative technologies. That means kind of retrenchment is अपने expenditures को cut down करना, अपने
फैसिलिटीज़ जो कस्टमर को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जो नंबर ऑफ़ कस्टमर ग्रुप्स हैं, उन सबको रिड्यूस करना, दैट्स कम्स इनटू द रिटेंशन पार्ट. देन कॉम्बिनेशन इज़ बेसिकली जब दो या दो से ज़्यादा when all the three strategies are taken together, the previous three strategies taken together, this comes into the combination part, the number of portfolios, the number of strategies going to be understand. Then modernization is again kind of in a grand strategy which the organization can use. This is technology is used as a strategic tool to increase the production and productivity or reduce the cost. Through modernization, the company aim to gain the competitive and strategic strength. In that terms, जब टेक्नोलॉजी वाइज इम्प्रूवमेंट होती है या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, उसे मॉडर्नाइजेशंस बोलते हैं. एंड then the diversification is another one which involves the change in the business definition, either in term of customer functions, customer group, alternative technologies. It is done to minimize the risk by spending over the several businesses. That means जब हम लोग किसी भी तरीके की diversification करते हैं in terms of diversifying our businesses, diversifying our nature of product, that comes into the diversification. Joint venture when two or more companies form a temporary partnership, they comes together and they perform for a single objective or the mutual objective, that comes into the joint venture. Strategic alliances, this is basically when two or more companies unite to pursue a set agreed upon the goal but remain independent. That means जो भी उनका एक objective है fulfill करने का, उसमें they perform together, but as in terms of individuality, they remains the individual firms. Then mergers. It is an external approach to expansion involving two or more than organization. That means when two or more organizations comes and merge together, that comes into the merger strategy. Acquisition is basically for the organization which acquire another. एक organization जब दूसरी organization को acquire कर लेती है, that comes into the acquisition. Takeover basically was there is a strong motive to acquire other for a quick growth and diversification. जल्दी growth के लिए और जल्दी डाइवर्सिफिकेशन के लिए जब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिव के साथ दूसरे को टेक ओवर कर लेता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, दैट्स कम्स इनटू द टेक ओवर. देन divestment is when company is divesting, has known ownership and control in that business and is engaged in complete selling of a unit. That means अगर एक डिपार्टमेंट एक पूरी यूनिट को अगर एक कंपनी सेल आउट करना चाहती है, दैट्स कम्स इनटू द डाइवेस्टमेंट, यानी कि वो डाइवेस्ट करती है, मिनिमाइज करती है. देन टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, दिस इज बेसिकली व्हेन द कंपनी इज सिक एंड कॉन्टिन्यूसली मेकिंग लॉसेज, सो इट गोज़ फॉर द टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी. यानी कि जब कंपनी को किसी भी तरीके के प्रॉफिट्स जनरेट नहीं हो रहे होते हैं, इन दैट टर्म्स टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी ली जाती है. इट इज़ द इफेक्ट इन सर्विंग अ नेगेटिव ट्रेंड एंड इट इज़ इफेक्ट ऑफ कीपिंग एन ऑर्गेनाइजेशन अलाइव. ये सिर्फ इसीलिए किया जाता है just to keep them organization exist in the market. The basic purpose of turnaround is to make the existence, at the same time you stop performing that particular task जो कि आप perform कर रहे होते हो. So these are the various strategic alternative which a firm can take while analyzing the environmental analysis. उसको environmental analysis को understand करने के बाद जो best suited strategy होती है उसे choose किया जाता है by understanding the business conditions. Then choose of a strategy. This is a kind of in a second stage, formulation stage में ही when we comes to know कि number of strategies होती हैं जो prepare होती हैं. So then finally the steps come in that formulation stages to choose the strategy. Strategy को choose करना. अब strategy को choose करने के लिए there was a two factor. One is subjective factor, another is objective factor. Subjective factor is mainly related to the quantified. That means they were experience based. कि they were not that quantified or experience based. इनमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें किसी भी तरीके के फैक्ट्स या फिगर्स नहीं होते हैं या किसी भी तरीके की कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, बट दे वर मोर टुवर्ड्स द एक्सपीरियंस बेस्ड. जितने भी हमारे हेड ऑफ या टॉप मैनेजमेंट होते हैं उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर ये सब्जेक्टिव फैक्टर को लिया जाता है. देन ऑब्जेक्टिव फैक्टर विच कैन बी क्वान्टिफाइड. येस, दैट्स वेरी ऑब्वियस. ऑब्जेक्टिव फैक्टर जो हमारे क्वान्टिफाइड होते हैं. सो कोऑपरेटिव पोर्टफोलियो एनालिसिस इज दी वन ऑफ द फैक्टर विच कम्स इनटू इट. यानी कि जब हम लोग एक पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन अपने पूरे एनालिसिस करती है, दैट कम्स इनटू द एक्सपीरियंस कर्व.
इसमें एक्सपीरियंस कर्व जैसी टेक्निक्स भी अडॉप्ट होती हैं, पीएलसी कॉन्सेप्ट आता है, बीसीजी मैट्रिक्स जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं, E9 सेल मैट्रिक्स, स्पेस डायग्राम, हॉर्स प्रोडक्ट मार्केट एवेल्युएशन मैट्रिक्स, डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स. These are all comes into the corporate portfolio analysis, which we will discuss one by one in further sessions. Then competitor analysis. Competitor analysis. Competitor analysis is basically just to understand दी कंपटीटर इन द मार्केट. जैसा कि कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो में एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में स्टडी करती है, अपने बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंड करती है, सेम एज कंपटीटर एनालिसिस के अंदर कंपनी वाज गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंपटीटर्स अवेलेबल इन द मार्केट. जो भी एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है. एंड देन इंडस्ट्री एनालिसिस. Industry analysis is basically when the organization is focusing on the industry. जिस भी प्रोडक्ट के साथ वो काम परफॉर्म कर रही है, उस प्रोडक्ट के साथ वो ओवरऑल इंडस्ट्री में कैसे काम कर रही है. दैट्स कम्स इनटू द इंडस्ट्री एनालिसिस. Yes, after getting the environmental scanning and strategy formulation जिसके अंदर हम लोगों ने n numbers of strategies को identify किया and we select the one strategy formulation stage के अंदर business अपनी strategy को understand कर लेती है. So now we were moving towards the another step which is strategy implementation. Strategy implementation is what? Implementing the strategy. After evaluation of alternative, the choice of strategy is made. So now the strategy needs to put into the action. So implementation stage is all about putting your strategy into an action. In strategy implementation, one has to pass through the different steps. Strategy implementation के अंदर बहुत सारे steps को pass through करना पड़ता है. And what was these steps are? The first one is the project implication, then procedural implications, then resource allocation, structural implication, functional implication, behavioral implication. First, discuss about the project implication. Project implication is a comprehensive plan of action for acquiring the land to installation of machinery within a time frame. That means अगर आप किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो जिसके लिए you are making all the strategies, so in that term it is what finally implementing that machineries on the respective acquiring land. Then procedural implication. Procedural implication is basically it involves completing all those procedural formality that has been prescribed by the government, both central and state. So a procedure is a series of related tasks that make up the chronological sequence and establish the way of performing the work to be accomplished. In terms of that means जितनी भी प्रोसीजर्स होते हैं एक स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जितने भी डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए, वेदर इट्स रिलेटेड टू योर लाइसेंसिंग फैक्टर, वेदर इट्स रिलेटिंग टू योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वेदर इट्स रिलेटेड टू एनी इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स. आप जब उन प्रोसीजर्स को एक्चुअली लाइंड अप करते हो, यू मेक द सीरीज ऑफ ऑल दैट टास्क दैट्स कम्स इन टू द प्रोसीजर implementation. Then resource allocation. It is what after the procedural implementation there is a resources allocation. That means the organization has to allocate the resources both inside the company and outside the company. It has to make the decision regarding the short term or the long term allocation. So this is whole about कि आपको understand करना है inside or outside the companies which will you have to actually locate the resources. At the same time आप अपने terms भी define करते हो whether you are working for the short term or the long term. So that comes into the resource allocation. Then structural implication. Structural implication is basically is the strategy involve designing of the organization structure and interlinking the various units and sub units of the organization. आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने में जो भी डिपार्टमेंट्स, जो भी यूनिट्स काम कर रही हैं, जितनी भी यूनिट्स वहाँ परफॉर्म कर रही हैं, दीज ऑल यूनिट्स आर बेसिकली कम्स एंड परफॉर्म. दैट इज़ व्हाट बेसिकली डिज़ाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल स्ट्रक्चर. कि एक प्रोजेक्ट के लिए आपको कितना बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, कितना छोटा स्ट्रक्चर चाहिए, किस तरीके से वो स्ट्रक्चर आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, और उसके उन सारी एक्टिविटीज़ की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन में आ जाती है. Then functional implementation. Functional implementation is deal with
the development of policies and plans in the different areas of a function which our organization undertakes. Structural implementation define करने के बाद जब हम एक overall structure बता देते हैं, if it's big or if it's small, उसके बाद we will move towards the functional implementation. फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन इज़ बेसिकली आपके एक काम परफॉर्म करने के लिए जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स परफॉर्म होते हैं उन डिपार्टमेंट्स को सेटल डाउन करना और उन्हें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए देना. दैट्स कम्स इनटू द फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन. देन बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन. Behavioral implementation finally deals with those aspects of the strategic implementation that have the impact on the behavior of a people in the organization. Since human resource from an integral part of the organization, their activities and behavior need to direct in the certain way. That's obvious. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स काम परफॉर्म करते हैं. जैसा कि हम इस पूरे स्टेप्स के अंदर वी वर फर्स्ट टेकिंग केयर ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट मीन्स वी आर टेकिंग केयर ऑफ द लैंड एंड मशीनरीज, देन वी वर टेकिंग केयर ऑफ द होल प्रोसीजर्स, होल फैसिलिटीज़ जो कि हमें एक अडॉप्ट करनी होती हैं while implementing the strategy. Then resources allocation is the another factor we will consider. Then structural implementation. It is what the defining the overall structure of the organization and finally working on the functional part. That means finally working on the functional implementation of the society. So that is what, after understanding all these material factors, we move towards the humanistic factor, that is behavioral implementation. Behavioral implementation is all about the human. That means because they were going to perform in the organization, and this performance further leads to the success for the organization. So that is why it is what taking care of the leadership style, taking care of the organization culture, taking care of the values and ethics, corporate governance, organization policies. The organization have to consider all these factors while implementing any kind of a strategy. Now, after understanding the three of the steps of the strategic process, now we are moving towards the evaluation and control. Evaluation and control is all about evaluating and controlling the strategies. So this is the last step of the strategy making process. To get the successful result and to achieve the organization objective, there has to be continuous monitoring of the implementation of strategies. Evaluation of a strategy is done by the top managers. Evaluation emphasizes measurement of the result of the strategic actions. That means किसी भी तरीके की सक्सेस को अचीव करने के लिए, किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए दिस इज़ रिक्वायर्ड टू हैव द कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ऑन योर ऑल द एक्टिविटीज़. आप जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो उन पर प्रॉपर कंट्रोल मेंटेन करना. सो दैट कम्स इन टू द एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजी. अंडरस्टैंड द होल अबाउट स्ट्रैटेजी. एवोल्यूशन जो कि टॉप मैनेजमेंट करती है, इट इज़ ऑल अबाउट डिफाइनिंग और एम्फसाइजिंग ऑन द रिजल्ट विच यू गेटिंग फ्रॉम द स्ट्रैटेजिक एक्शन. So yes, evaluation of control include that 3 basic areas. कौन से 3 basic areas involve होते हैं evaluation control में? सबसे पहले measurement of the organization process. प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से परफॉर्म कर रही है. फीडबैक फॉर द फ्यूचर एक्शंस, किस तरीके के फीडबैक प्रोवाइड किए जाएंगे. एंड लिंकिंग द परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स एंड कंसीडरिंग द परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स. आफ्टर evaluating the performances of the strategies, the main task comes into the controlling. That means when the top management of the organization has to maintain the control on that all strategies part. First is the feed forward control. Feed forward control is basically आप किसी भी तरीके के काम स्टार्ट करने से पहले जब किसी भी तरीके के फीडबैक्स या आइडियाज़ या मॉडिफिकेशंस जनरेट करते हो अपने पूरे टास्क के अंदर, दैट्स कम्स इनटू द फीड फॉरवर्ड. किसी भी तरीके की whatever the changes or whatever the feedback is, whatever the information is, but एक एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले जब आप उस एक्टिव इन्फॉर्मेशंस को एड अप करते हो या वैल्यू एड्स लेते हो, दैट्स कम्स इनटू द फीड फॉरवर्ड कंट्रोल. Concurrent control is basically those control which comes in between the performance of that particular task. जब आपकी कोई भी पर्टिकुलर टास्क होते हुए जब किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशंस एड अप होती हैं जस्ट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर strategies or maintaining that proper control, that comes into the concurrent control. And feedback control is very obvious when you actually completed all your tasks and after that performing that task you get the feedback. So this comes into the feedback control. So yes, this is the 3 type of control which can be managed. After understanding that 3 type of control, there is the whole process of maintaining that control कि किस तरीके से वो control measure होता है.
सो इन दैट केस सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जब आप किसी तरीके के परफॉर्मेंस को सेट करते हो, दिस इज़ फर्स्ट, आप किसी भी तरीके के कंट्रोल मेंटेन करने से पहले एक स्टैंडर्ड डिफाइन करोगे. आफ्टर डिफाइनिंग द स्टैंडर्ड यू एक्चुअली मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस की अल्टीमेट परफॉर्मेंस आई क्या है. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस यू वर वर्किंग फॉर द एनालिसिस वेरिएंसेस. किस तरीके के एनालिसिस आप किस किस तरीके से उसे आप एनालाइज कर सकते हो. आफ्टर एनालाइजिंग द वेरिएशंस then you are moving towards the taking corrective action when you actually take the corrective measurement. So this is the 4-step controlling process. Controlling का ये 4-step process है, which is very much obvious and very much known that you have to define the standard define करने के बाद आपको actual performance define करनी होती है. After that you analyze the difference between that standard and actual performance and then you take the corrective action, because this is the मेन थर्ड स्टेप इज़ द मेन पार्ट, बिकॉज यू हैव टू जज द वेरिएंस. दैट मीन्स आपको यहाँ पे वेरिएशंस निकालनी है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है. अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा अचीवमेंट है तो दैट मीन्स देयर वर नो रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, बट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से कम परफॉर्मेंस है या मिनिमम परफॉर्मेंस है, इन दैट टर्म्स यू नीड सर्टन काइंड ऑफ एक्शन टू रेक्टिफाई दिस काइंड ऑफ factors. So yes, now there were the few questions which you have to do to yourself. Then first is, what is evolution and control? Evolution and control क्या होता है? You have to explain it. This is the last stage and performed in the top management level. So this is about the evolution and control. Then what are the various kind of strategies can be prepared in the organization? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी तरीके की स्ट्रैटेजीज परफॉर्म होती हैं. यू जस्ट हैव टू नेम देम. उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना है, उनके सिर्फ नाम बताने हैं. जैसे डाइवर्सिफिकेशन, इंट्रीगेशन, देयर इज द मर्जर, द डाइवेस्चर, दीज काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज नेम यू हैव टू गिव, जो कि स्टडी किए गए थे. सो येस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज सेशन. सो वी आर वाइंडिंग अप फॉर द टुडे. सो थैंक यू सो मच. वी लर्न, हैप्पी लर्निंग.